Hello and welcome to JPod. This is a podcast on journalists and journalism. My name is Krishna Prasad and it's great to see you here. In a nation where more than half the population is below 25 years of age, professional education has boomed in the last couple of decades to make the most of the so-called demographic dividend. Journalism education in particular has seen gravity and logic defining growth. As liberalization freed up the airwaves and TV channels made a hack's life glamorous, hundreds of journalism schools and colleges with varying claims of quality have opened shop to produce industry-ready talent. And the rise of internet-based journalism has given specialized training a further boost. But like with everything else it has encountered, the COVID pandemic has thrown a big question mark over the future of journalism education. Where will the thousands of graduates and diploma holders be accommodated if established journalists themselves are being thrown out of their jobs? Do the faculty of our journalism schools and colleges, especially in the small towns and languages, have the resources to train students for the new kind of journalism required? In this episode of JPod, I'm joined by two guests to discuss what is in store. From Bangalore, we have Professor Kanchan Kaur, the Dean of the Indian Institute of Journalism and New Media, IIJNM. A former journalist at the Indian Express, Deccan Herald and Gulf News, Professor Kaur is also an India assessor for IFCN, the International Fact-Checking Network. And from Delhi, we have Professor Anand Pradhan, a professor at the Indian Institute of Mass Communication, IIMC. Formerly with All India Radio, Dr. Pradhan is also a noted columnist and is the editor of IIMC's peer-reviewed Hindi journal, Sanchar Madhyam. So here are Professor Kaur and Professor Pradhan on journalism schools, student journalists, and journalism itself going forward. Good morning, Professor Kanchan Kaur and Professor Anand Pradhan, joining me from Bangalore and Delhi, respectively. It's great to talk to both of you teachers and gurus in different ways. It's, of course, funny times to be talking in. But as journalism teachers, both of you, Kanchan and Anandji, how do you view the current situation across the world and also in India in specific? How are you people processing the news of these job cuts and salary cuts and hiring squeezes? What is really going through your mind and how has life changed for you? Let's start with you, Kanchan. What do you make of what's going on? Morning, KP. It is actually like the Chinese curse. We are living in very interesting times. On the one hand, we have been very fortunate that we had only 3 weeks of classes, of which we had about 1 or 2 weeks of work, and the other was just vivas left when we wound up the academic year for 2019-20. Right. That was easily done. But what we are looking forward to are two things. One is to place all the students who graduated in 2019-20, like you said, looking with trepidation at job cuts, salary cuts, and so on and so forth. And on the other hand, we're looking forward to what we can do in the coming academic year. On the business of job cuts, one thing is for sure. Young people with skills that can be used to reach out to everybody through the internet, through online, will continue to remain in demand. Yeah. Because they will bring in new perspectives, hopefully, new ideas of shall we say, communicating information, new ways of doing old things, if you want to put it that way, new ways of looking at journalism, new ways of looking at the basics and the principles of journalism, and putting them out in a way that will help media houses, media channels to recuperate from this terrible time that they're going through. Kanchan, let's come to those questions a little later.
Yeah. I'm asking you very specifically what is going through your mind? Forget the students at this point. What's Yeah. going through your mind as the person who heads the Indian Institute of Journalism and New Media? What is going through your mind, and what are your thoughts? Forget the students at this point. So the thoughts basically are, yes, the journalism is going through a difficult time. There are job cuts and there are salary cuts. What is going through my mind is basically to look at the possibility of placing students who have just graduated, and to look at what skill sets can be imparted to the next batch of students that will make them attractive to recruiters. Excellent. Anandji, Mhm. good to talk to you. As I speak with both of you, I can hear a bird chirping in the background. I That's don't know. I don't know whether the bird is chirping in Delhi or in Bangalore. I Bangalore. hope it's. I hope it's in Bangalore. It is in Bangalore. It is in Bangalore. But at my end, you can hear a hammer being hit into something in front of my house, and I secretly hope that somebody is trying to hammer Indian journalism into shape. But that apart, आनंद जी, आपके मन में क्या चल रहा है जब इस परिस्थिति को आप देख रहे हैं, जब पत्रकारिता इतनी गड़बड़ में है, इतनी क्राइसिस में है, आपके मन में क्या चल रहा है? और also the fact is that you were telling me that today is Hindi Patrakarita Day. So it's a good day to talk to you, Anandji. You're a fine voice in Hindi academic journalism, media journalism. So I welcome you and I want to hear your thoughts. आपके मन में क्या चल रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रसाद जी, आपने आज ये मौका दिया मुझे बातचीत करने का। मैं अपने और आपके जरिए सभी श्रोताओं को भी आज हिंदी पत्रकारिता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे मन में भी एक सवाल जो बहुत गहरा चल रहा है कि एक ऐसे समय में जब हमारे दुनिया भर में और भारत में भी सब लोग चिंतित हैं इस पैंडेमिक की वजह से, महामारी की वजह से, उस समय जब लोगों को सूचनाओं की, इंफॉर्मेशन की, न्यूज की, और वो भी क्रेडिबल न्यूज की, ऑथेंटिक न्यूज की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस समय हमारे न्यूज रूम श्रिंक कर रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, उसमें लोग घट रहे हैं, उसमें से लोगों को निकाला जा रहा है, उनकी सैलरी कट्स हो रही हैं। एक तरह से आप देखें कि बहुत सारे अखबारों ने अपने एडिशंस बंद करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे अखबारों के सामने, खास करके छोटे और मझोले अखबार, जिनको हम कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज न्यूज़पेपर्स, जो एक तरह से हमारे देश में मीडिया या आप कह लीजिए न्यूज लैंडस्केप में एक तरह का डाइवर्सिटी पैदा करते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी क्राइसिस है उन न्यूज रूम्स में। और मैं ऐसे बहुत कम से कम दर्जनों अखबारों को जानता हूं जो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन सब राज्यों में छोटे छोटे कमिश्नरी में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर बहुत अच्छा काम करते रहे हैं, लेकिन उन सब के लिए एक तरह की बड़ी क्राइसिस आ गई है। तो हमारे जो एक मीडिया एकेडमिक्स में हम हैं, हमारे विद्यार्थी अब कहां जाएंगे? और खास करके वो जो जर्नलिज्म करना चाहते हैं, जो एक तरह से जिसको हम कहते हैं ना ठेठ जर्नलिज्म करना चाहते हैं, रियल जर्नलिज्म करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, ये हम बहुत पिछले, आज की बात नहीं है, महामारी से बहुत पहले से ही, पिछले 3 4 5 सालों से आप टेलीविजन न्यूज रूम में देखिए, रिपोर्टिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। वो एक तरह से टेलीविजन में जो भी रिपोर्टिंग है वो एएनआई के जरिए है, और रिपोर्टर्स नाम की चीज खत्म हो गई है, वो सारा स्टूडियो ड्रिवन ड्रामा है। न्यूज़पेपर्स में भी जो थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग रह गई थी, वो भी धीरे धीरे, अगर न्यूज रूम श्रिंक होंगे, लोगों को निकाला जाएगा, तो ज्यादातर प्रेस रिलीजेस पर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर, ट्विटर फीड पर आधारित रिपोर्टें रह जाएंगी। तो मुझे ओवरऑल इन दिनों ज्यादा चिंता यह है कि जब लोगों को सूचनाओं की ज्यादा जरूरत है, उस समय हमारा खास करके जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो काफी श्रिंक कर रहा है, वो काफी अपनी भूमिका घटा रहा है। आप एक तरह से उससे जो इस समय जरूरत थी,
उसको वो नजरअंदाज कर रहा है। तो ये मेरे लिए एक बड़ी चिंता है, और इसके कारण जाहिर है कि जर्नलिज्म स्कूल्स पर भी बहुत दबाव है। हमारे जो मैं एक समस्या बहुत पिछले कई सालों से फेस कर रहा हूं कि पत्रकारिता में जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और जो बेहतर स्टूडेंट्स हैं, वो जर्नलिज्म में नहीं आ रहे हैं। उनकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं है, इक्का दुक्का, मतलब एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो। तो ये एक बड़ी चिंता है, क्योंकि एक तो दो इसके बड़े कारण हैं। और वो बड़े कारण ये है कि एक तो जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है, और दूसरा उनको रिम्यूनरेशन के लेवल पर भी, सैलरी के लेवल पर भी, वो भी सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो दोनों लिहाज से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, और खास करके रीजनल प्रेस, या रीजनल टेलीविजन चैनल, या लैंग्वेज टेलीविजन चैनल, या लैंग्वेज प्रेस, वो एक तरह से मुझे लगता है कि फेल कर रहे हैं, और वो उसके कारण हम अच्छे स्टूडेंट्स भी अट्रैक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। Excellent. Kanchan, this issue of journalism education is a very interesting issue at this point in India because we have hundreds of journalism schools and colleges across the country. There are journalism universities, there are specialized journalism schools like yours. What is the status? I mean, we know the status of newspapers and magazines and TV stations. What is the status of journalism schools? In the sense that how has journalism education been affected by COVID? One, two, do you know personally of any person in a professor or a lecturer or who has lost his job because of this crisis? Do you know of any college which is shut down? What is the status really of journalism teachers? It's a bit too early to find out if anybody has lost their job or has of journalism colleges have shut down, because the COVID crisis has come at a moment where we are between years, between academic years. Right. But yeah, so but the overall the way one would look at the situation in the country, and the other day I was trying to make an estimate for somebody of how many journalism graduates are put out. And that came in about the tens of thousands, about 20 to 30,000 through the year. Yeah, through across the country. If there are 20 to 30,000 journalism students who are graduating every year, the question that comes to one's mind is, where are the jobs? Where are these people going? Are they actually going into journalism? Like Professor Anand said, are they really going into hardcore journalism, or are they going into peripheral areas like marketing, communication, advertising, PR, and so on and so forth? And if they are not going into hardcore journalism, does that indicate that journalism in the next couple of years or the next few years in India is going to be the worse off for it? That is a question that comes into my mind. Yeah, sorry. आनंद जी, आपका क्या हाल है? क्या आपने हिंदी पत्रकारिता में जो एजुकेशन है, जो टीचर्स हैं, क्या किसी के बारे में आपने सुना है? किसी कॉलेज के शटडाउन के बारे में सुना है? नहीं, मुझे भी अभी नहीं मिला है इस तरह की कोई जानकारी, लेकिन मुझे पिछले दिनों कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड हैं, उनके लोगों से कुछ बात हो रही थी, मेरी कल ही बात हो रही थी। और मैं आपको बहुत फ्रैंकली शेयर करना चाहता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ये कह रहे थे कि आपके साथ, वो मेरे साथ एक वेबिनार करना चाहते थे, और वो चाहते थे कि मैं उसमें बहुत पॉजिटिव बातें करूं और ये बताऊं कि जॉब्स की कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं लोगों के सामने। क्योंकि वो कह रहे थे कि उनके इंस्टीट्यूट के सामने, उनके कॉलेज के सामने एक बड़ा चैलेंज ये है कि इस साल स्टूडेंट्स आएंगे कि नहीं। क्योंकि जो इंडस्ट्री की सिचुएशन है उसकी खबरें चारों तरफ जा रही हैं। इस बैच के जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं वो जॉब क्राइसिस फेस कर रहे हैं, प्लेसमेंट की प्रॉब्लम्स हैं।
तो नेचुरली एक तरह से बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए खास करके मुझे लगता है इस साल खास करके उनके लिए जो जिन्होंने मीडिया एजुकेशन में सचमुच में इन्वेस्ट नहीं किया था आइदर एट द लेवल ऑफ फैकल्टी और रिसोर्सेज, उन्होंने मीडिया बूम जो पिछले 15-20 सालों में आया था उसका फायदा उठाने के लिए अपने यहाँ डिपार्टमेंट्स खोल लिए, कॉलेजेस खोल लिए। उन सब लोगों के लिए एक बड़ी क्राइसिस आने वाली है और मुझे लगता है कि अगले 1-2 सालों में हम ये देखेंगे कि जैसे पिछले 10 सालों में आपने देखा कि मैनेजमेंट स्कूल्स, बहुत सारे जो मैनेजमेंट स्कूल्स थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, वो बंद हुए या बंद हो रहे हैं। उसी तरह की सिचुएशन जर्नलिज्म एजुकेशन में भी आने वाली है, which I can foresee now while talking to many, who are working in different colleges or private universities. तो वहां एक समस्या मुझे दिख रही है, अभी तुरंत नहीं दिख रही है, लेकिन अगले 6 महीनों में हम ये देखेंगे कि जब एडमिशन्स वगैरह नहीं होंगे, स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, तो कई जगहों पर जॉब लॉसेस मीडिया एजुकेशन में भी, कॉलेजेस या डिपार्टमेंट शट डाउन होंगे। Kanchan, that's a very good point because, as you remember, in the last couple of years, Tamil Nadu in particular has had nearly 300 or 400 engineering colleges shut down, because of lack of demand. And I think you're better placed to answer this specific question, Kanchan, which is that given the fact that you head an institution, what changes have you had to make once the situation developed, for the coming year? What are the changes you have had to make? You don't need to reveal any state secrets, but I know that many journalism schools also run largely on visiting faculty and so on and so forth. But what are the basic changes you have had to make in your mind, at least for the year, at least for the next 1 year? There really are no state secrets. It's just that we've been very fortunate in some ways that we work with a lot of technology already. We do get speakers from all over the world who talk to our students online. We are able to work with students and faculty online, which is what we did in the last couple of weeks of the academic year. So, like you mentioned, we do work with a lot of visiting faculty, and the visiting faculty were happy to log on from their homes and talk to students. While all of that is there, my biggest concern really is that you cannot do away with boots on the ground. You have to have students going out there and reporting. And right now, our concern is trying to work around that. We are trying to find ways of working around the fact that our students at some point in time, not initially possibly, but later will have to go out and do reporting on the street. And how do we protect them at that point? What are the precautions to be taken? And what is it that we have to equip our students mentally for when they are going to be going out? That is what we are looking out for. But at a faculty level, have you had to make any changes? At an Really, institutional no. level, have to make any changes? Really, no, because like I said, our faculty are very happy to work with technology. They're happy to work from home, and if necessary, come to the campus. We've really had no problem on that front. Like I said, we've been very fortunate because we've already been doing these kind of things. I can foresee that as a problem in other undergraduate colleges at some point. I should think that might be a problem. आनंद जी, आप क्या समझते हैं, क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा अगले साल में? देखिए, चेंजेस तो बहुत सारे करने पड़ेंगे, खास करके पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में, जहां हमें अब जैसे देखिए, एक बड़ी चुनौती जो आने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं, खास करके परमानेंट फैकल्टी है और जो पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन या रिमोट या ब्लेंडेड लर्निंग में जाना और उसमें ऑनलाइन टीचिंग करना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो यह है कि मैं ये समझता हूं कि उन सभी टीचर्स को भी ट्रेन करना पड़ेगा। एक तो हमें अपने कोर्सेज को भी रीडिजाइन करना पड़ेगा। अभी जितनी भी कोर्सेज हैं, और एक तरह से जर्नलिज्म ट्रेनिंग के बारे में मैं ये समझता हूं, अगर आप एक ट्रेड ट्रेनिंग के और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के बारे में अगर आप समझें,
तो स्टूडेंट्स के साथ एक जो ऑन कैंपस ऑन साइट ट्रेनिंग में जो मेंटरिंग का पार्ट है, जो उनके साथ डे टू डे क्लासरूम एंड आउटसाइड क्लासरूम डिस्कशन का पार्ट है, और जो स्टूडेंट्स का ग्रुप में बैठ करके पीयर लर्निंग का पार्ट है, ये सभी चीजें अगर ऑनलाइन में हम जाएंगे तो वी विल मिस दैट। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज है। अगर सिचुएशन अगर ठीक नहीं होती है एंड वी आर फोर्स टू गो ऑनलाइन और अ ब्लेंडेड learning method, then it will certainly create huge problem for most of the journalism schools, particularly in public sector universities and colleges, because we have to retrain teachers, we have to redesign our courses, because we have to also train our students. Because आप जैसे मैं आपको एक हिंदी पत्रकारिता के बारे में, या उर्दू हमारे यहाँ है पत्रकारिता का पाठ्यक्रम है, या हमारे यहाँ मराठी है, मलयालम है, उड़िया है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में हमारी ये कोर्सेज हैं। अब इनमें जो हमारे विद्यार्थी आते हैं, उनकी अगर आप सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल देखेंगे, तो वो बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के छोटे जिलों और तालुका से आते हैं, जिन्होंने पहली बार शायद कंप्यूटर देखते हैं, वो हमारे यहाँ आकर के लैपटॉप इस्तेमाल करना सीखते हैं। स्मार्टफोन में कई के पास नहीं होता, कई के पास तो मैं आपको कहूं जीमेल अकाउंट नहीं होता। तो ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास, उनके लिए एक तरह से डिजिटल डिवाइड, उनकी एक्सेसिबिलिटी का क्वेश्चन इंटरनेट तक, उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो उतने नहीं हैं। तो जितनी डाइवर्सिटी हमारे एक तरह से आप कहिए कि इंस्टीट्यूशन के अंदर है, जिस तरह के बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए ये ट्रांजिशन इतना इजी नहीं होगा। मुझे लगता है इसमें हमें बहुत मुश्किल आने वाली है, बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात, आई एम अ बिलीवर ऑफ ऑन कैंपस। कैंपस को नथिंग विल रिप्लेस कैंपस, ऑन साइट ट्रेनिंग। even if we are technology smart, but technology is just is a helping tool। आपको केवल मदद कर सकती है, कुछ चीजों को एम्पलीफाई करने में मदद कर सकती है, कुछ चीजों को आसान बना सकती है। आई एम नॉट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, but I personally think that technology is just a amplifier or is just a helping hand, a tool। but जो लोग एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच जो क्लोज रिलेशनशिप है, particularly in humanities and social sciences and especially in journalism training, मुझे लगता है कि उसमें अगर हमें केवल स्किल को अगर ना देखें, तो जो नॉलेज बेस्ड जर्नलिज्म है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर्सनली आई थिंक टेक्नोलॉजी विल चेंज, बट नॉलेज or understanding about your society, about history, about economy is the most important part of a journalism teaching and training. I personally think that technology may change after 5 years. Students or those who are working there, they may adapt to new technology they can learn in 5 days or 10 days or 20 days. But knowledge is more important, and for that I think mentoring, answering their question, one to one, or in a group or in a peer learning setup is far more important. Kanchan, again, to say the same point once again, that's very interesting because your position is a little different from, let's say, IAMC, because you mostly do only English language, education, so therefore it's much simpler. And what Anand is talking about is a very live and real issue, which is the inequality, the inequity of students from other languages who are handicapped by the situation if we all go online. So I think that's quite interesting to place on the table, in the sense of, do these students from other languages have the facilities? Do they have the equipment? Do they have the skill sets? That's very important in this situation, I would think. And given the fact that most people predict that language journalism is going to go higher and English language journalism is going to go lower in terms of at least reach and circulation and influence. So therefore, this question becomes very important as to how we deal with this. Yes, I agree. I completely agree with you on this. We have experimented with teaching students language journalism. We encourage students to work with
their own languages. In fact, towards the end of the year, when students are really proficient with their work and so on and so forth, we let them have a little, well, for fun, but actually for them to experiment. Also, we have bulletins, television, their broadcast bulletins in different languages, and we've had bulletins in ranging from languages from Kannada to Hindi, of course, Kannada and Hindi, and Bangla and Malayalam. So Hmm. we've had people, students who've actually decided that they will conduct or they will do stories that will be published in these languages. I think that is very interesting. The other interesting point that Professor Anand made was this question of connectivity. Hmm. Not everybody has access to broadband. Not everybody has access to 3G or 4G, and it will be tough for students who are in the remote areas, who come from remote areas, to get online. Hmm. Apart from that, there is also this question of one-on-one mentoring. Yes. It's easy when you're on campus. It's easy to walk into a faculty's room and sit down and say, I don't understand a thing, or say, could we talk about this? But it would be a lot more difficult if things were to go online. Hmm. Hmm. Now I hear a dog barking, and I hope this is in Yes, Delhi at least. it's again Bangalore. I really don't know what to do. So what's happening, Anandji? Dogs are not barking in Delhi. Birds are not chirping in Delhi. Hammers are not being heard in Delhi. What is the situation? you know uh, like journalism these days, uh, Delhi is completely sanitized. Yeah, so, yeah, journalism is sanitized. They are offering only what we call feel good journalism. yeah, So so only feel good journalism or a feel good atmosphere is served to you through Delhi. yeah. Delhi is power capital, so it's completely sanitized. So that's why you may not be listening to a dog No, no. barking or, yeah, birds chirping. But on a more important point, what you were raising, personally, I think journalism education broadly is Hmm, going through a massive transition phase or churning phase. hmm, The way journalism is per se changing. The old institutionalized big organization journalism, I don't see, except few big companies surviving. I personally see, in next 5 to 10 years, you will see a lot of acquisition and mergers. Only few big media conglomerates with the telecom, companies and other, Reliance and others, they may be becoming even bigger. The problem will start with the smaller and the middle-sized newspapers or the hmm, television channels. It would be very difficult for them to survive. hmm, And also because their job losses, shrinking newsrooms, what a new trend I can see, what they call in US, one-man armies, like you are doing a hmm, podcast, or hmm, like Barkha, doing Mojo story. I can see hundreds of such journalists, hmm, doing individually a very fantastic job. hmm, So I personally think in coming future, journalism schools should also encourage their students to think, not only think about getting an employment with a big news company or a media house, but also think about launching their own venture, maybe a small website in a district headquarter, or maybe a community newspaper, or maybe a community radio station, or maybe a podcasting, or maybe a small YouTube channel. All these things, what in the US, entrepreneurial journalism, hmm, giving them tips or training or understanding about, not only thinking about mainstream journalism, because, these days, what I'm facing, many of my journalists,
journalism students, when they go to big news houses or media companies, जैसे भास्कर में चले गए या मान लीजिए जागरण में चले गए, वहां पत्रकारिता तो हो नहीं रही है। अब जब पत्रकारिता नहीं हो रही है तो कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में और सालों में वो बेड़ा छोड़, उनको लगता है कि क्या करें, ये यहाँ तो पत्रकारिता हो नहीं रही है और यहाँ हम जो काम कर रहे हैं वो एक तरह का पब्लिक रिलेशन का काम है। कई बार उनको अपने विचार के खिलाफ जाकर के भी चीजें करनी पड़ती हैं। तो ये मैं एक चीज फील कर रहा हूं कि बहुत सारे हमारे बच्चे ड्रॉप आउट हो रहे हैं जर्नलिज्म से। उन्होंने बहुत उत्साह से हमारे यहाँ आए, पढ़ाई की, मीडिया हाउस में गए, उनको नौकरियां भी मिल गई, लेकिन 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में देर इज अ ऑल्सो इशू ऑफ बर्निंग आउट। वहां से वो परेशान होकर के छोड़ रहे हैं। जैसा कंचन जी कह रही थी कि बहुत सारे लोग पब्लिक रिलेशन कंपनीज में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया मैनेजर और इस तरह की चीजों में भी जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत आइडियलिस्ट हैं, जो कुछ अलग करना चाहते हैं और कर रहे हैं। मैं ऐसे दर्जनों बच्चों को अपने जानता हूं जो पिछले 15 साल में कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ सक्सेसफुल हैं, कुछ नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसी वॉइसेस भी हैं जिसको मैं कहूं कि दलित समुदाय से आती हैं, आदिवासी समुदाय से आती हैं। वो उन लोगों ने भी अपना, जैसे एक दलित दस्तक के नाम से शुरू किया, आज वो काफी सफल है। जो दलितों की आवाज है टेलीविजन, एक तरह से यूट्यूब चैनल पे, या एक तरह से बोलता है हिंदुस्तान, ऐसे कई एक्सपेरिमेंट करें। मुझे लगता है कि जर्नलिज्म स्कूल्स को केवल बड़े मीडिया हाउसेस को सर्व करने के लिए, उनके लिए हमें एक तरह से एक स्टूडेंट नहीं बनाने हैं, बल्कि हमको एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरह सोचने वाले जर्नलिस्ट तैयार करने के बारे में और उस तरह का करिकुलम, उस तरह का ओरिएंटेशन देने की जरूरत है। Well, Anandji, you've taken words out of my mouth completely. But let me persist with this point. I agree with you that this situation is not something that has developed overnight. I think it's been building for quite some time now, and COVID has only expedited the process, in my opinion. And I think you are basically saying the same thing. Anandji, let me ask you, Sankshipt mein, why do you think we have reached this position in journalism? मुझे तो सबसे बड़ा कारण इसका यही लगता है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ मीडिया हाउसेस है, जिसने मुनाफे को सबसे बड़ा कारण बना दिया, और खास करके जो रीजनल जर्नलिज्म में जिस तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट आए, जैसे एक एक समय रीजनल जर्नलिज्म में ऐसा आया जिसको आप कह लीजिए चिट फंड कंपनियां थी। जो चिट फंड कंपनियों ने बहुत सारे अखबार और टेलीविजन चैनल शुरू कर दिए। कुछ जो बिल्डर्स थे वो जो मतलब एक तरह से मीडिया की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए आ गए। दे नेवर केम टू जर्नलिज्म टू इनकरेज हार्डकोर, ट्रूथफुल, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म। तो ऐसे सारे लोग जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे, उन सब लोगों ने पूरे जर्नलिज्म में जो हालात पैदा कर दिए हैं। एक समय लगा कि बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, पर सडनली हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वेंचर्स एक तो या तो फोल्ड हो गए या बंद हो गए, और उन्होंने काफी सारे एक तरह से बेरोजगार पत्रकार पैदा कर दिए। दूसरी तरफ उन्होंने जर्नलिस्ट को एक एक बहुत बड़ी, ये मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि आप भी जानते होंगे, बहुत सारे जर्नलिस्ट को उन्होंने एक तरह से पावर ब्रोकर्स बना दिया, उन्होंने ब्लैकमेलर्स बना दिया। बहुत सारे अखबारों में मैं जानता हूं कि अगर आपको ब्यूरो चीफ बनना है तो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि आप किस जो पावर में पॉलिटिशियन उसके कितने क्लोज हैं, उससे आप कितने काम करा सकते हैं उस ग्रुप के। तो मुझे लगता है कि इन सब कारणों में जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ जर्नलिज्म है, जिसको एक जमाने में बहुत वाह वाह की गई और कहा गया कि इससे ही जर्नलिज्म की को एक तरह से फ्रीडम मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, वो एक क्राइसिस में पहुंच गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, मुझे जो लगता है कि जो जर्नलिज्म का में इस तरह के जो वेस्टेड इंटरेस्ट आए, चाहे वो बिल्डर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, चिट फंड कंपनियां थी, उन्होंने भी बहुत नुकसान किया है। और उनके कारण बहुत सारे छोटे अखबार, जो छोटी पत्रिकाएं थी, मैं आपको जैसे छत्तीसगढ़ की बताऊं, देशबंधु अखबार के बारे में आपने सुना होगा, जिसने कम से कम 15 सालों तक लगातार स्टेट्समैन रूरल रिपोर्टिंग का अवार्ड जीता। छोटा सा अखबार नवज्योति राजस्थान में। ऐसे सभी अखबार एक तरह से बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। जनमोर्चा का आपने सुना होगा नाम,
उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद से निकलने वाला जनमोर्चा अखबार है, वो एक कोऑपरेटिव न्यूज़पेपर था, वो बंद होने के कगार पर है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े प्लेयर आ गए जिन्होंने पैसा बहुत झोंका और छोटे अखबारों के लिए जीना मुश्किल कर दिया। तो एक तरह से ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन और ये वेस्टेड इंटरेस्ट आए, इन्होंने पूरे एक तरह से मीडिया को बहुत खत्म कर दिया। और एक बड़ी और चीज हुई, 90s में जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद आंदोलन चला और उसके बाद आरक्षण का आंदोलन चला, उसने जर्नलिज्म की जो एक तरह से सोशल प्रोफाइल थी, खास करके रीजनल और लैंग्वेज जर्नलिज्म की, जो एक तरह से आप कह लीजिए एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट था हमारे जर्नलिज्म का, जिसमें महिलाएं कम थी, खास करके लैंग्वेज जर्नलिज्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं। महिलाएं नहीं थी, आदिवासी नहीं थे, दलित नहीं थे, पिछड़े नहीं थे, माइनॉरिटीज के लोग नहीं थे। जो ब्राह्मण बनिया प्रेस था, उसकी जो क्राइसिस थी, ये सब भी उभर करके आने लगे हैं। Kanchan, you must weigh in on this issue, because I think this is really the crux of this debate, which is that journalism and journalism education is poised at this strange position because of what's been developing for so long. On a lighter note, I hope you have an elective on how to become a power broker or a fixer or an operator. but why do you think we've reached this position beyond what Anandji says? There are more than one factors. One, of course, what Professor Anand says is absolutely right on this whole business of journalists being power brokers. But that's not a new phenomenon, KP. I'm sure you know that. We've seen that when we were younger too. Journalists were power brokers. We're still very even young, then. Kanchan. Yeah, I know. But yes, but when we were starting out in journalism, we've seen journalists who were power brokers even then. Nothing new at all. What I think has added to the mix of this whole salad bowl, which is turning into a melting pot, is this business of technology, which has made everybody, which has, on the one hand, democratized information, access to information, which is a great thing, but it has also democratized publishing and production. And that, I think, has added to this whole mix of journalism being what it is. Also, the journalism in some ways is a reflection of what our society is. We have not been doing very much critical thinking in the last few years as a society. So I don't think journalists are also part of that society, and I don't think there has been very much critical thinking on the part of journalists as well. We've not been asking questions. We've not been speaking truth to power. It's a cliche, I know, but then that is the truth. We've not been doing those things, and I think it is the business of journalist educators to reinforce what journalism really should be. That we cannot be putting out information without verification. That we cannot be quoting anonymous sources just to serve interests of either our own owners or of people in power. But that's precisely the point Anand is making, which is that although we may teach these skills to young students, Yes. the market for this in the newspapers or TV stations they join is very limited. There's not enough demand for this kind of journalism anymore amongst these organizations. And so therefore the question arises is, how do we inculcate the skills that these newspapers want or these websites want? It seems to be that we are teaching something and the organizations require something else. Kanchan. I'm not sure we can be teaching them how to be power brokers to begin with. But what we can teach them is how to take your skills and try and put out stories that would make a difference to people. I was speaking to somebody else yesterday, and they were talking in the sense of in the context of a lot of misinformation being put out. And my point there was the only way you can counter misinformation is by making information or correct information cool and sexy. And you need to be working towards that. Even when I think, KP, this was a point that you used to make all the time.
The point is that we need to make the important interesting. And this is a line I'm quoting from you. No, I completely agree with myself, so don't worry about Yeah, that. yeah. But Anandji, you were trying to come in. Sorry, I cut you off, Yeah. Kanchan. But No, no, Anandji, go on. you were trying to come in. Let me ask you a larger question because you have thought a little about these issues. It's very easy for us to talk about what journalism education should be, what we should teach young children and students, and so on and so forth. But the truth is, looking at, especially at the Hindi market, as I do, and I see most of these Hindi papers every morning, it seems like there is not enough of an audience for this anymore. इसमें दो चीजें मैं पहले कहना चाहता हूं जो हम पहले बातचीत कर रहे थे। ये बात सही है कि पहले भी पावर ब्रोकर्स होते थे। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं और पहले और आज में क्या फर्क आया है। पहले कुछ इंडिविजुअल जर्नलिस्ट पावर ब्रोकर हो सकते थे, पर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम एडिटर टू द बॉटम ये कोई कल्चर नहीं थी, एक्सेप्टेबल नहीं था। ओनर्स इंक्लूड कीजिए आप। हाँ, ओनर्स के साथ आज जो बड़ा परिवर्तन आया है, चेंज आया है, वो ये है कि ये सब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है। जो पेड न्यूज है, हाउ यू विल डिफाइन पेड न्यूज? पहले भी कुछ जर्नलिस्ट हो सकता था, वो आपको उनको कुछ गिफ्ट दे करके, उनको कुछ चीजें दे करके आप उनको करप्ट कर सकते थे। बट नाउ द होल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, द कंपनी इटसेल्फ इज सेइंग टू समबडी दैट यू पे अस, वी विल पब्लिश दिस, which is completely institutionalizing the corruption, unethical practices. तो ये पहले और आज में ये फर्क आ गया है कि अब इसको एक्सेप्टेबल मान लिया गया है न्यूज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि एडिटर वही हो सकता है या ब्यूरो चीफ वही हो सकता है जो पावर सेंटर के करीब हो। और यही नहीं, अब तो ये भी हो गया है कि जो सरकारें आती हैं और जो मंत्री बनते हैं वही ब्यूरो चीफ भी अपॉइंट करवाते हैं, वही एडिटर्स भी बनवा रहे हैं। तो अब पहले और आज में फर्क आया है, हमें इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और ये एक बड़ा चेंज है विच इज कमिंग फ्रॉम कॉर्पोरेटाइजेशन of journalism or the corporatization of news media, and also entry of chit fund companies, vested interests, builders, politicians, and some of the big companies like the topmost companies in media business. जो आप एक और सवाल उठा रहे हैं, मैं उसकी तरफ भी आना चाहता हूं। ये बात सही है और कई बार मैं भी ये खुद रियलाइज करता हूं। कई बार हमारे स्टूडेंट्स जो फीडबैक देते हैं जब वो कंपनियों में या किसी अखबार में या किसी टेलीविजन चैनल में जाते हैं, तो वहां उनसे जो पहली उनकी ब्रीफिंग होती है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं कि उनको बुला करके सबसे पहले ये कहा जाता है कि जो अभी तक आपने सीखा और आपको बताया गया है एथिक्स के बारे में, उसको अब डी लर्न करना है। You have to de-learn what you have learned in your college or institution. वो सब किताबी बातें थी। अब आपको असलियत के बारे में जानना चाहिए और हमारी ये पॉलिसीज हैं, हमारा ये है, हमारा ये, हमको ये नहीं करना है, हमको ये करना है। कई बार हमारे बच्चे बहुत परेशान होकर के फोन करते हैं और वो ये कहते हैं कि सर ये यहां तो ये हो रहा, हमसे ये कहा जा रहा है, हमसे ये करने को कहा जा रहा है। मैं ऐसे कई जो मतलब भारत में जो लोग रोज सवाल पूछते हैं देश को, इंडिया कंट्री वांट्स टू नो, उनके यहां जो हमारे कुछ बच्चे गए काम करने, वो जिस तरह से न्यूज रूम में गाली गलौज करना, जर्नलिस्टों को मतलब यंग लोगों के साथ बदतमीजी करना, ये सब चीजें जो न्यूज रूम में हो रही हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है, एंजाइटी का कारण है हमारे जर्नलिज्म स्कूल्स में भी, स्टूडेंट्स के बीच भी, जो हमारे बच्चे पास होकर के जो हमारे एल्युमनाई काम कर रहे हैं, जिनके ड्रॉप आउट्स और बर्निंग आउट के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। हमने कुछ साल पहले एक सर्वे किया था, कोई मुझे लगता है 8 साल पहले। उसमें हमने अपने स्टूडेंट से जो पिछले 7-8 सालों से मीडिया में काम कर रहे हैं, खास करके टेलीविजन में, मैंने उनसे पूछा उनके हेल्थ के बारे में। कम से कम आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 40, सारे के सारे बच्चों में से
कम से कम 20% को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी और स्ट्रेस के शिकार थे। बहुत सारे बच्चों को हाइपरटेंशन हो चुका था और कम से कम 5% ऐसे बच्चे थे जिनको डायबिटीज हो गई थी। I see. आई थिंक दिस इज टेरेबल। और जो हमारे न्यूज रूम्स में हो रहा है, ये व्हाट इज हैपनिंग, it will not attract good students, good and quality students. In future we are going to face a huge problem in media industry. Lack of talented people may not come and join journalism, I'm telling you. Hmm. Kanchan, that's a good point to ask this next question. Given what the position of Indian news media is, given what COVID has done to us, what is the level of interest do you think in studying journalism just now? And what kind of journalism do you think students want to learn? I would look at it, I think it would be in two ways. One, there would be a set of people who would look and say, this doesn't work for me. Journalism is not the best thing to do just now, and not be interested in it. But on the other hand, they might look at the work that is being done across the world by journalists who are covering COVID in a very coherent, clear, interesting manner, who are putting out facts there in ways that are really engaging. I would point out the story that Washington Post, the infographic that Washington Post's reporter Harry Stevens made about how COVID spreads. There are very interesting ways of doing stories, and I would think that young people would be interested in doing this kind of work in the future. आनंद जी, आपको क्या लगता है? Why do you think, Anand ji, why do you think journalism in this current situation is still a worthy area of academic study or exploration for a young boy or girl, especially from, let's say the Hindi heartland? Why do you think they should get into journalism and study journalism when they know that this is the situation, when they know that their health might not be good, when they know that the health of the industry might not be good, when they know that the skills they have learned might not be used? Why do you still think journalism is a worthy area of exploration? एक अभी भी सारी बातों के बावजूद, एंड डिस्पाइट बीइंग सो क्रिटिकल, let me also confess that journalism still attracts, particularly from Bihar, from UP, Madhya Pradesh, very idealist students. They, or young people, they think that they can change something through the power of journalism, because newspaper penetration in villages is increasing. That's true. गांव गांव तक अखबार पहुंच गए हैं, पहुंच रहे हैं, और उनकी पावर, ये बात जरूर है, उनकी इन्फ्लुएंस थोड़ी कम हुई है, लेकिन अभी भी वो काफी ताकत रखते हैं, और वो एक तरह का ग्लैमर और उसकी पावर लोगों को अट्रैक्ट करती है। दूसरी एक वजह ये भी है, मैं समझता हूं, जो आइडियलिज्म है, एक्टिविज्म है हिंदी हार्टलैंड में, बहुत सारे जो यंग एक्टिविस्ट हैं, who may be associated with different type of political groups और social groups, उनको भी आगे कैरियर में या तो लॉ एक लगता है प्रेफरेबल ऑप्शन, और या फिर जर्नलिज्म लगता है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास या हमारे इस तरह के जर्नलिज्म स्कूल्स और कॉलेजेस में आते हैं। तो मेनली ये दो है, और तीसरा वो भी है जो बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और एंकर्स को देख करके आकर्षित होते हैं अभी भी, और अभी भी इस तरह की जो फील गुड स्टोरीज हैं कि इस एंकर को 5 लाख रुपए सैलरी मिलती है, इस एडिटर को 1 करोड़ का पैकेज मिलता है, ये सब स्टोरीज भी अभी भी आती रहती हैं। मतलब हमारे जो फील गुड मैगजीन्स हैं, ग्लॉसी मैगजीन्स हैं, उसमें जर्नलिज्म के बारे में बीच बीच में इस तरह की रिपोर्ट्स और फीचर्स छपती रहती हैं कि इतनी सैलरीज मिल रही हैं, इतना आपको पावर मिल रहा है, आपको इस मिनिस्टर और इसके क्लोज हो सकते हैं आप। ये भी चीजें आकर्षित करती हैं। तो इस तरह के बच्चे आ रहे हैं।
पर ये कितने दिन चलेगा, मैं अभी बहुत कंफर्म नहीं हूं कि ये सिचुएशन कितने दिन कंटिन्यू और करेगी. May I also Well, add, sorry to interrupt. please, May please. I just add a counter to what Professor Anand said uh, about students joining news houses where they are told to unlearn what they've been taught. I agree that happens all the time. But there are students who find their niche in those houses as well. And the ones who don't, and those who are disillusioned and who are actually very idealistic, actually come out of those places and look for smaller organizations that will take their stories, that will take their stories driven around ethics, driven around values. And I've seen a lot of young people do that. They have moved away from larger houses, larger media houses, and gone into smaller places that will take their stories that are meaningful. So that is going to happen. And in with the use of technology, with at least I think technology is universal, whether it's the Hindi heartland or whether it is a city like Bangalore. With the use of technology, there is going to be space for people to start their own small YouTube channels or their own Instagram channels or their own little blogs or websites, which could eventually develop into something larger or more interesting. Because journalism will have to go through this phase, and eventually, what will survive the currency of journalism anyway is credibility. So And in a even if sense, you, you so in a yeah. sense, Kanchan, what you're suggesting is that you've basically given up on big media as an agent of change. That this is where stuff will happen. That whatever we need to do will have to be done small scale by individuals or by small organizations, and big media will just count the cash. I think it will start in the small places, and then big media will have no choice but to to follow. Really, is there any evidence to show that? There is no evidence, but if you look at what one big large media house had done 10 or 15 years ago, where they said that a newspaper was nothing but an FMCG, has moved on from there to do work that could be in some ways could be called in the public interest. At least, if not for anything else, at least to pretend that they are in the public interest. आनंद जी आप क्या समझते हैं does big media in Hindi, Urdu, etc. do they still have the power to do any journalism? Do they have the desire to do any journalism of the kind we are discussing, or will they just keep making the money, and will journalism have to be eventually be done by smaller organizations and individuals and newspapers and TV stations? जो हिंदी और दूसरी भाषाई अखबारों की बात है, उसमें इक्का दुक्का अपवाद हो सकते हैं, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कुछ स्टोरीज कभी आ जाए, कोई कभी आर्टिकल आ जाए, लेकिन जनरली मैं पर्सनली इफ यू आस्क मी, I don't see any hope in big media houses because is there a structural problem, and they are actually trapped. What they have cultivated in last 20 or 30 years, they are trapped into it. It's very difficult for them to come out from this. जो जर्नलिज्म अगर संभव होगी, I am very hopeful journalism will survive. Journalism will survive in smaller, decentralized, smaller groups. They will certainly, will pursue hardcore journalism, investigative journalism, the real stories they will bring out. वो अकेले भी हो सकते हैं, ग्रुप में भी हो सकते हैं, and there are hundreds of such platforms or smaller newspapers or magazines or groups will influence people, public opinion also. They will start in molding public opinion also. तो मुझे तो उम्मीद ये लगती है कि आने वाले समय में, अगले 10 सालों में जर्नलिज्म का ज्यादा दो दो एक तरह से पोल हो जाएंगे. एक तरफ जो बिग मीडिया है, which is very sanitized, talking in the language of ruling classes or the ruling party, propaganda, disinformation. And on the other hand, thousands and thousands of smaller, either maybe individual journalists or a group of journalists driven ventures.
they will be making, huge impact on future of journalism, and they will actually pursue hardcore journalism, and people will support that. What I can see that slowly people, a large number of people will realize that we have to support this kind of journalism. और ऐसे वेंचर्स, ऐसे फिलंथ्रोपिस्ट, ऐसे बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग भी इसको सपोर्ट करेंगे. दे विल सी सम cause or worth in such ventures, and it will flourish. Hmm. Hmm. Kanchan, you are in Bangalore. Anand is in Delhi as we speak. But what is the future, do you think, of journalism education in the smaller towns? That's very important as far as I'm concerned. Smaller towns and cities, smaller colleges. You guys run very big colleges, but in smaller towns, smaller colleges with not very endowed students and parents, and especially in the smaller languages. What do you think is the future there, Kanchan? Journalism education in smaller towns will thrive if they are innovative enough. You don't need deep pockets to do journalism any longer. Everybody has a smartphone. Everybody has access to internet. You can see what Khabar Lahariya does, for instance, or for that matter, what Subhranshu Chaudhary did with his, I forget the name, CGNet. CGNet. Yes. So there, you have to just be innovative, think out of the box. The minute you start doing that, there is no end to anything. You can achieve anything. It's just how you look at, how you take a situation and turn it to your advantage. Make lemonade when God gives you lemons. Anandji, do you agree that this is the way of the future? Innovation, digital, small, web. Is that too idealistic a picture? No. It's true. It's actually factual. It's happening. It's happening now. आपको मैं बात कर रहा था, हमारे एक आज से करीब 10 साल पहले हमारे आईएमसी से एक स्टूडेंट जिसने ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म का कोर्स किया, और वो बहुत ही एक आप कह लीजिए कि ऐसे सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल से आया हुआ स्टूडेंट था, जो बहुत, जिसको आप कह लें कि दलित समुदाय से, पिछड़े समुदाय से, उसको जॉब मिलना मुश्किल थी. उसने अपना खुद का एक चैनल शुरू किया नेशनल दस्तक के नाम से, और वो नेशनल दस्तक, अब अगर आप YouTube पर जाएं तो उसके करीब 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आज. 4 मिलियन, 40 लाख सब्सक्राइबर्स आज उसके नेशनल दस्तक के हैं, जिसमें वो दलितों की आवाज उठा रहे हैं. तो मुझे लगता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं, आने वाले समय में इस तरह की वॉइसेस, दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की, पिछड़ों की, अलग अलग इलाकों की आवाजें आपको ज्यादा मीडिया में it will be really democratic media, where number of millions of voices you can hear. But of course there is a problem also with this. I'm not saying that there is no problem in it, but लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इस तरह का मीडिया जो इनोवेटिव होगा, जिसमें एक तरह से कम्युनिटी की आवाज हो, जिसका कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट ज्यादा हो, जो रियल इश्यूज को उठा रहे हो, जो एक तरह से इंडिविजुअल लेवल के लेवल पर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हो, सरकार से सवाल पूछ रहे हो, उसको लोग पसंद करेंगे और लोग उसको मदद भी कर रहे हैं. और कई ऐसे वेंचर्स के बारे में मैं जानता हूं हिंदी क्षेत्र में ही, जो फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और वो सस्टेन कर रहे हैं, 10 लोगों की टीम सस्टेन कर रहे हैं. तो मुझे लगता है कि ये फ्यूचर है और इसमें पॉसिबिलिटीज हैं. Excellent. So let me just come to the last couple of questions, Kanchan. We will of course see the way teaching is done in journalism schools and colleges. Of course, we might go all remote, all online technology, etc., etc. What is your one piece of advice to teachers, Kanchan, as we speak, to lecturers, to professors, to adjunct faculty?
what is your one piece of advice, not just in your college, but anywhere else, on how to navigate this future? If there was one thing I would say on how to navigate the future is to keep your feet on the ground, to have your head on your shoulders, no matter what method or whatever medium you're going to be using to teach journalism. We need to remember that at the end of it, we have to be teaching them what they need to know as journalists who will be out there, even if they're not changing the world, who are just doing the job that journalists have to do. No matter what the medium is, we need to remember that that is what students will have to be taught. They will have to be taught to roll with what comes their way. They will have to be taught with to work with whatever new technology comes. All of that is fine. But at the bottom of it, they need to be taught good journalism. That is the only thing. Anand, you were saying that students, when they go into the media houses, have to unlearn their skills. If I were to That ask is you what, about media, yeah, that is what media companies are, asking. no, I know that. So therefore, now the question is, I'm asking you your advice to teachers. Will they have to learn new skills as opposed to their students unlearning those skills? I think a teacher should surely read more, learn more, research more. And also I agree with Professor Kanchan that they should, keep their feet on ground. They should, keep close connection with the ground, and prepare their students, empathize with them, support them, mentor them, and encourage your students also to read more. Anandji, if I were to ask you for a piece of advice to students who are going to come into your college, not just in IIMC, but anywhere else, what is that piece of advice to students? I would, strongly recommend to read more, and particularly read books on humanities, social sciences, research, learn more skills, and the over but I am, great votary of a broader understanding of Indian history, politics, constitution, economy. So, keep your feet in knowledge, expand your knowledge base, be critical, imbibe critical thinking in you. That will help you in long run to sustain yourself. Kanchan, do you agree that there's a market for this kind of knowledge in this kind of market? Whether it is this kind of market or any kind of market, there is a need for good journalists, and that will continue to be there. It might dip, it might rise, given different situations, given what the society is going through, what the country is going through. But there will always be a need for good journalists. So I would say any student who wants to join journalism should keep that in mind. But first, I would say be curious. Be curious about the world around you. Be curious about what is happening around you. And I think that will make all the difference. And ask questions. Ask as many questions as possible. I think it's only when you ask questions does a democracy actually survive. And if a democracy doesn't survive, then you have no journalism. Well, Kanchan, you have provided advice to both teachers and students. Let me ask you for your advice to the elephant in the room, which is the media houses, the owners, the promoters, the publishers. What is your one piece advice to these fellows? My only one piece of it wouldn't be advice. My only the only one thing I'd like to tell these people is that the only currency of journalism is credibility. The minute you lose credibility, you lose everything. You might right now be power brokers. You might be able to run a great for-profit organization that is pretending to be doing journalism, but in a while, people will begin to realize that the emperor has no clothes.
Anandji, what do you think? What do you think media houses, media owners, publishers, the so-called bean counters, what should they be doing, especially in Hindi, which is a really problematic market as far as I'm concerned? What do you think they should be doing in the next few months and years? Krishna Prasad ji, that would be, my wishful thinking, because I know the nature of, capital and the investment they have made in their companies. Uh, I personally think that, even we may think that they should, focus more on hardcore journalism, critical journalism. They must ask question to the power or speak truth to the power. But वो करने नहीं जा रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं लगती उनसे। एक बात और मैं जो कहना चाह रहा था, जो कंचन जी की बात से भी मैं सहमत हूं। एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो नॉलेज का रोल है, नीश जर्नलिज्म, उसके लिए भी बहुत जगह बनने जा रही है, क्योंकि बिकॉज देयर इज अ bombardment of information, and there is so much information, it's very difficult for common people to make sense of that information. तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में, जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आपने एक पेज देखा, एक्सप्लेन्ड, ये इस तरह की जो जो आपको पूरी बैकग्राउंड दे, जो उसके बारे में जो रिसर्च है, जो एकेडमिया में हो रहा है, उससे आपके बारे में बताएं। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट एक्सपैंडिंग द नॉलेज बेस ऑफ फ्यूचर जर्नलिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट जस्ट about providing information, it's also making sense of that information. And making sense of information means giving the whole background, context, and researching what are the different opinion or researchers saying about that particular phenomenon. So explaining that phenomenon is more important. मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में mainstream media is also understanding it. And apart from mainstream media, even the smaller ventures, they also understand it, and they will certainly focus on it. और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की एक्सपर्टीज और नीश जर्नलिज्म के लिए भी बहुत मौके हैं। जैसे आपका ये पॉडकास्ट है, बहुत ही नीश पॉडकास्ट है जो आप पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे और पॉडकास्टर्स के बारे में मैं जानता हूं, यूट्यूब चैनल के बारे में जानता हूं, जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, जिसके बारे में सुनना चाहते हैं लोग। तो मुझे लगता है कि एक तरफ जो शाउटिंग मैचेज हमारे टीवी स्टूडियोज में चल रहे हैं, जहां कुछ नहीं होता है गाली गलौज के अलावा, उससे अलग हटके के सेनर वॉइसेस, जो जो लॉजिकल क्रिटिकल बातें कर रहे हैं, लोग उसकी तरफ लौट रहे हैं और उसका एक फ्यूचर है। आई होप बिग मीडिया हाउसेस विल अंडरस्टैंड द ट्रेंड, but I really don't know whether they will able to, or they are equipped to follow it. Well, that was a good conversation, which I really enjoyed and learned from. Professor Kanchan Kaur of the Indian Institute of Journalism and New Media in Bangalore, I thank you very much for joining us on this conversation. And thank you, KP, for having us. And Professor Anand Pradhan from the Indian Institute of Mass Communication in Delhi. It was wonderful to hear both of you, and I really thank you very much for your time, patience, and for the extraordinary scholarship you have displayed in airing these issues before all of us. Thank you so very much for joining me. Thank you, KP. बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस बातचीत में बुलाने के लिए, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी नई चीजें, नए आइडियाज बातचीत में सीखने का मौका मिला। आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच सर।